ये प्रैक्टिस सेट स्पेक्ट्रम की यूजीसी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। इस क्वेश्चन बैंक में कुल 11 यूनिट हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और 11th यूनिट में सैम्पल टेस्ट हैं। इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड अ टीचिंग स्किल। इसके ऑप्शंस हैं, नंबर 1 ब्लैकबोर्ड राइटिंग, नंबर 2 क्वेश्चनिंग, नंबर 3 एक्सप्लेनिंग, नंबर 4 ऑल ऑफ द अबाव। तो इसका आंसर है नंबर 4 ऑल ऑफ द अबाव। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि द ब्लैक बोर्ड इज मेन विजुअल एड यूज्ड बाय टीचर्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग. Questioning skills are essential to good teaching. Teachers often use questions to ensure that students are focused and engaged and to assess students' understanding. Questioning is the important means by which teachers find out what pupils already know, identify gaps in knowledge and understanding, and enable them to close the gap between that they currently know and learning goals. Explanation is an important skill in a classroom. An explanation is a set of interconnected statements made by the teacher related to a phenomenon, an idea, etc., in order to bring about or increase understanding in the pupils about it. Teachers who explain things well, making the complex simple, score highly as great teachers. यानी कि इसमें ब्लैक बोर्ड राइटिंग तो स्किल है ही, क्वेश्चनिंग है, क्योंकि क्वेश्चनिंग से टीचर को पता चलता है कि कितना स्टूडेंट को भी पता है, क्या गैप्स क्या हैं उसकी नॉलेज में, उस गैप्स को या उस चीज़ को जिसका नहीं पता है वो उसको बताए, और एक्सप्लेनेशन यानी जो चीज़ है उसको एक्सप्लेन करे। तो यानी कि चारों के चारों ही इसमें करेक्ट आंसर हैं, तो आंसर 4 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। कौन सा सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? नंबर 1 ऑप्शन, टीचर्स कैन टीच। नंबर 2, टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट इन ए स्टूडेंट अ डिज़ायर टू लर्न। थर्ड, lecture method can be used for developing thinking. फोर्थ, टीचर्स आर born. तो इसका आंसर है 2, यानी कि टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट इन ए स्टूडेंट अ डिज़ायर टू लर्न। एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट आस्पेक्ट ऑफ बिकमिंग ए टीचर इज़ लर्निंग हाउ टू मोटिवेट योर स्टूडेंट्स। कैसे मोटिवेट करें कि वो फर्दर जो है लर्निंग की तरफ, सीखने के लिए आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स हु आर नॉट मोटिवेटेड विल नॉट लर्न एफिशिएंटली, they won't retain information, they won't participate, and some of them may even become disruptive. तो इसमें जो ऑप्शन 2 है वो ही मोस्ट अप्रोप्रिएट है, यानी कि बाकी भी ठीक है, टीचर्स कैन टीच ये भी ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? नंबर 1, सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम। सेकेंड, syllabus is an annexure to curriculum. Third option, curriculum is the same in all educational institutions affiliated to a particular university. Number 4, syllabus is not the same in all educational institutions affiliated to a particular university. Correct answer is 1, that is syllabus is a part of curriculum. The explanation is, the syllabus is defined as the documents that comprise topics or portion covered in a particular subject. The curriculum is defined as the guideline of the chapters and academic content covered by an educational system while undergoing a particular course or program. It covers the teaching methods, lessons, assignments, physical and mental exercises, activities, projects, study material, tutorials, presentations, assessments, test series, learning objectives, and so on. The curriculum is well planned, guided, and designed by the educational institution. Now, question number 4, which of the following is not instructional material? जो कि instructional material कौन सा इसमें नहीं है? नंबर 1, overhead projector, audio cassette, printed material. Fourth is transparency. The correct answer is 4, transparency. Transparency is not an instrumental material. Transparent teaching and learning methods help students understand how and why
They are learning course content in particular ways. The transparency project offers faculty a means to gather and share data on how these methods affect students' learning across departments, institutions, and countries. Question number 5. Which of the following statements is not correct? Number 1. Lecture method can develop reasoning. Second option. Lecture method can develop knowledge. Third option. Lecture method is one-way process. Fourth. During lecture method students are passive. तो इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? तो करेक्ट आंसर इज 1 कि लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग. ये सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शंस ठीक हैं. इसका एक्सप्लेनेशन है कन्वेंशनल लेक्चर्स आर इफेक्टिव ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट इन अटेनिंग important curriculum objectives. They do not encourage critical thinking. Lectures are generally used to teach new knowledge and skills, promote reflection, and stimulate further work and learning. The main benefits of lectures are they are an effective way of providing information that is not accessible from other sources. They can be cost effective for transferring factual information to a large audience. They provide background information and ideas, basic concepts and methods. They can be used to highlight similarities and differences between important concepts. They can be a useful way of demonstrating processes. The main disadvantage of lectures are lecturing tends to place the audience in a passive role. People may be busy taking notes but usually have little time to reflect, question, or examine and synthesize ideas. Another disadvantage is lectures are not an effective method for changing attitudes or encouraging higher order thinking. Lecturing doesn't encourage the audience to move beyond memorizing the information. Now, question number 6. The main objective of teaching at higher education level is first option to prepare students to pass examination. Second option is to develop the capacity to take decisions. Third option is to give new information. Fourth is to motivate students to ask questions during lecture. तो टीचिंग हायर एजुकेशन लेवल पे टीचिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इसका आंसर है सेकंड, दैट इज टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस. द ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन आर एज फॉलोज. Number 1, wisdom and knowledge. Education is both a training of minds and training of souls. It should give both knowledge and wisdom. Second, aims of the social order. Our education system must find its guiding principle in the aim of social order for which it prepares. Unless we preserve the value of democracy, justice, liberty, equality, and fraternity, we can't preserve our freedom. Third point is love for higher values of life. The greatness of a country depends on the love for higher values of life. We must develop thought for the poor and sufferings, regards and respect for women, faith in brotherhood regardless of race, color, religion, etc. Fourth point is training for leadership. So जो higher education का ऑब्जेक्टिव है मेन, ये जो नॉर्मल एजुकेशन, प्राइमरी लेवल एजुकेशन या उसकी बात नहीं हो रही है. ये ध्यान रखना कि हायर एजुकेशन लेवल पे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इन सब चीज़ों को, वैल्यूज़ को, विजडम, नॉलेज, इन सब चीज़ों को देखकर हम जो है करेक्ट डिसीजन जो है वो लेने की क्षमता पैदा हो. तो इसलिए सेकंड ऑप्शन टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस. क्वेश्चन नंबर 7. टीचर्स यूज टीचिंग एड फॉर number 1, making teaching interesting. Number 2, making teaching with understanding level of students. Number 3, making student attentive. Number 4, the sake of its use. इसमें सेकंड है, करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, दैट इज मेकिंग टीचिंग विद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स. तो टीचिंग एड से क्या है कि वो जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे तरीके से समझा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवेल्युएशन? Option number 1, Ram got 45 marks out of 200. Number 2, Mohan got 38% marks in English.
Third, Sham got first division in final examination. Fourth option is all of the above. तो इसमें करेक्ट आंसर 4 है कि ये सब इवेल्युएशन के ही पार्ट हैं, यानी कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं और जो मार्क्स आते हैं या जो परसेंटेज आती है या कोई डिवीज़न आती है तो वो इवेल्युएशन का ही एक पार्ट है, यानी एग्ज़ाम लिया उसके बाद देखा कि स्टूडेंट को कितना आता है. एक्सप्लेनेशन है, इवेल्युएटिंग स्टूडेंट लर्निंग टेक्स टाइम एंड एफर्ट. हाउएवर, वेल डिजाइंड टेस्ट एंड consistent grading procedures provide students with valuable information about what and how they are learning. Providing timely and effective feedback helps students learn better, increase performance, and develop cognitive skills. In general, teacher evaluation refers to the formal process a school uses to review and rate teachers' performance and effectiveness in the classroom. Question number 9. Teacher uses visual aids to make learning option 1 simple, option 2 more knowledgeable, third quicker, fourth interesting. Now the correct answer is 4 interesting. तो विजुअल एड से लर्निंग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं जिससे कि वो अच्छे से समझ में आ जाए. इसका एक्सप्लेनेशन है, विजुअल एड्स कैन बी डिफाइंड इन 2 ways. As a picture or a diagram, you show learners to help their understanding, or in a wider sense, anything you show learners in a classroom to do this. A visual aid complements words with pictures, charts, graphs, or other visual information. Visual aids stimulate the interest of learners and help the teachers explain the concepts simply and easily. Now, question number 10. The teacher's role at the higher educational level is to, option number 1, provide information to students. Second option is promote self-learning in students. Third option, encourage healthy competition among students. Fourth option is help students to solve their personal problems. इसका करेक्ट आंसर है 2, यानी promote self-learning in students. Explanation है, the changes that took place in schools have altered the roles of teachers too. In the past, teachers used to be the major source of knowledge, the leader and educator of their students' school life. Teachers would organize after school activities. They used to be the authority in the class and often took over the role of parents. Now, teachers provide information and show their students how to tackle them. Though they are still considered to be a kind of leader in the class, they can be thought of as facilitators in the learning route. They are supporters rather than educators and also advisors towards parents. The role of higher education in fostering lifelong learning partnerships with teachers. Question number 11. Which one of the following teachers would you like the most? Option 1 is punctual, 2 having research aptitude, 3 loving and having high idealistic philosophy, 4 one who often amuses his students. तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, वो है 2 हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड. क्वेश्चन नंबर 12. माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट टीचर. Number 1, option number 1 is during the practice teaching. Number 2, after the practice teaching. Number 3, before the practice teaching. Number 4, none of the above. The correct answer is 1, that is during the practice teaching. माइक्रो टीचिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहती है प्रैक्टिस टीचिंग के दौरान. एक्सप्लेनेशन है, माइक्रो टीचिंग में बी डिफाइंड एज अ टेक्निक फॉर डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स. It involves videotaping teaching behaviors in a real or stimulated teaching situation for later analysis. It may be done in one session or in a series of sessions. Micro teaching has several advantages. It emphasizes on sharpening, developing specific teaching skills, and removing errors. It allows understanding of behaviors important in classroom teaching. It increases the confidence of the learner teacher. Now, question number 13.
Which is the least important factor in teaching? Number 1, punishing the students. Number 2, maintaining discipline in the class. Number 3, lecturing in impressive way. Number 4, drawing sketches and diagrams on the blackboard. तो इसमें सबसे ज़्यादा कम इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है? तो इसमें ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज़ पनिशिंग द स्टूडेंट्स. पनिशिंग द स्टूडेंट्स कभी भी टीचिंग में कोई मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं माना जाता. रादर एक्सप्लेन करना, कॉन्सेप्ट्स को समझाना, ये टीचिंग के पार्ट माने जाते हैं. 14th क्वेश्चन इज verbal guidance is least effective in the learning of number 1 aptitudes, number 2 skills, number 3 attitudes, number 4 relationship. तो 14 का आंसर है सेकंड, दैट इज स्किल्स. स्किल्स को वर्बली गाइडेंस से नहीं बताया जा सकता, बल्कि इसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताया जा सकता है. तो इसलिए ये जो वर्बल गाइडेंस है वो सबसे कम इफेक्टिव है स्किल्स के डेवलपमेंट में या स्किल्स को लर्न करने में. तो इसका एक्सप्लेनेशन है, verbal guidance is least effective in the learning of skills as skill instruction depends on the demonstrations. Question number 15, which of the most important aspect of the teacher's role in learning? Number 1, the development of insight into what constitutes an adequate performance. Number 2, the development of insight into what constitutes the pitfalls and dangers to be avoided. Number 3, the provision of encouragement and moral support. Number 4, the provision of continuous diagnostic and remedial help. इसका आंसर है 1, that is the development of insight into what constitutes an adequate performance. इसका explanation है कि teacher efficacy is a teacher's confidence in their ability to help students to learn. Research shows the teacher efficacy has an influence on his or her students' academic performance. Performance-based learning and assessment refers to a system of learning and assessment that is based on students performing learning-based tasks to demonstrate knowledge and skills. These tasks are student-centered and involve applying information to real-life situations. A teacher that understood their strengths, weaknesses, and interests would be better able to assist them to be successful academically. Question number 16. The most appropriate purpose of learning is number 1, personal adjustment. Second option is modification of behavior. Third, social and political awareness. Fourth, preparing oneself for employment. तो इसका करेक्ट आंसर है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. एक्सप्लेनेशन, द लर्निंग फंक्शंस अल्टीमेट एम इज टू चेंज पीपल, नॉट ओनली हाउ पीपल थिंक बट ऑल्सो व्हाट पीपल डू. Effective learning changes our brains and it changes who we are as people. In fact, learning is behavior change above all else. We certainly can only effectively measure learning by observing and determining changes in behavior or allowing people to exhibit the nature of changes in behavior brought about through some type of learning activity. There is no other way. Learning is defined as a relatively permanent change in behavior that follows as a result of experience. Now, question number 17. The students who keep on asking questions in the class should be, number 1, encouraged to find answer independently. Second option is advised to meet the teacher after the class. Third, encouraged to continue questioning. Fourth, advised not to disturb during the lecture. जो स्टूडेंट काफ़ी क्वेश्चन पूछता है क्लास में, तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट कि एंकरेज टू फाइंड आंसर इंडिपेंडेंटली. उसको एंकरेज करना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंटली आंसर जो है वो फाइंड करे, जिससे कि उसकी जो लर्निंग है वो बढ़े, रिसर्च एबिलिटी बढ़े. इसका एक्सप्लेनेशन है, आस्किंग क्वेश्चंस बाय टीचर और बाय स्टूडेंट्स इज ए नेचुरल फीचर ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स विच टीचर्स हैव एट देयर डिस्पोजल.
Questioning is crucial to the way teachers manage the class. Engage students with content, encourage participation, and increase understanding. Questioning is the key means by which teachers find out what pupils already know, identify gaps in knowledge and understanding, and frame the development of their understanding to allow them to close the gap between what they currently know and the learning goals. But questioning for the sake of questioning or excessive questioning should be channelized. Now, question number 18. Maximum participation of students is possible in teaching through option number 1, discussion method, 2, lecture method, 3, audio visual aids, 4, textbook method. तो इसका आंसर है 1, that is discussion method. Explanation है, discussion methods are a range of forums for open-ended collaborative exchange of thoughts between a teacher and students or among students for the purpose of expanding students' thinking, learning, problem solving, understanding, or literally appreciation. Now, question number 19. The teacher has been glorified by the phrase friend, philosopher, and guide because number 1, he has to play all vital roles in the context of society. Number 2, he transmits the high value of humanity to students. Number 3, he is great reformer of the society. Number 4, he is a great patriot. इसका करेक्ट आंसर है 2, दैट इज ही ट्रांसमिट द हाई वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी टू स्टूडेंट्स. एक्सप्लेनेशन है, टीचर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोसाइटी. दे कैन मेक और ब्रेक अ फ्यूचर जनरेशन. द स्टूडेंट्स आर लाइक द clay and the teachers are like the potters that shape their destiny. The teacher has been glorified by the phrase friend, philosopher, and guide because he transmits the high value of humanity to students. Question number 20. The most important cause of failure for teacher lies in the area of number 1, interpersonal relationship. Number 2, lack of command over the knowledge of the subject. Third, verbal ability. 4, strict handling of the students. The correct answer is 2, that is lack of command over the knowledge of the subject. अगर सब्जेक्ट की ठीक से नॉलेज नहीं होगी तो ये सबसे बड़ा कारण होगा टीचर के फेल्योर का. तो अभी इस प्रैक्टिस सेट में हमने 20 क्वेश्चंस लिए हैं. फर्दर और भी हम प्रैक्टिस सेट्स लेंगे. स्पेक्ट्रम के इस क्वेश्चन बैंक में हर यूनिट से 400-500 क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं यूनिट में, और उसके साथ साथ उसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है. तो अभी हम इसमें 20 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट हमने इसमें किया है. ये पार्ट 1 है. उसके बाद फिर फर्दर और भी पार्ट्स इसके हम लोग करेंगे. बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके वेबसाइट में इसके बारे में, बुक के बारे में और भी जानकारी आप ले सकते हैं. थैंक यू.